Hello everyone, welcome to our TimeIT Investort Channel. I hope you had a profitable day today based upon our yesterday analysis and pre-market checklist video. So let's quickly start with our analysis of 3rd July post-market analysis. So as you can see from the thumbnail, हम लोग thumbnail से देख सकते हैं that हम लोग expect कर रहे हैं that our peers are getting tired. आर वी एक्सपेक्टिंग रिवर्सल? क्या भालू थक गया है? क्या हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल? तो देखते हैं हम लोग हमारे एनालिसिस में एग्जैक्टली कहाँ मार्केट जा रहा है. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज आवर चैनल, दिस इज आवर लोगो. लेट्स क्विकली जंप इनटू निफ्टी. सो गाइस, आई थिंक ये जो मार्किंग्स किया हमने यहाँ पे ये अभी की मार्किंग्स नहीं है, ये हमारे आई थिंक 4-5 डेज से मार्किंग है. These markings is not something which we are doing on a daily basis. Major levels are marked from past 3-4 days. So as we expected today, on 3rd of July, we can see over here it gapped up and it went as high as 25,560 over here in the first 1 hour candle. So जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में बोला था कि मैं अपनी जो पंच इन करने वाला हूँ पोजीशन, that I will do it once market touches 25,530 or about that. जैसे मार्केट 25,530 के ऊपर गया somewhere around 9:30 के, आई थिंक मेरे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली पंच इन हो गए यहाँ पे. एंड एज एक्सपेक्टेड दिस लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर रिवर्स होकर हमारे जो सपोर्ट एरिया है यहीं पे आके रुका है मार्केट, exactly on the support levels. Market is running over here. So what we can see over here that market is still stuck in range. ये जो broader range है, if I try to take this up and draw a range over here. So एक range में stuck है हमारा market यहाँ पे. And I am waiting for this range to get broken. So at डेली लेवल, अगर मैं डेली लेवल पे चेक करूँगा यहाँ पे, तो मार्केट का जो ट्रेंड अभी भी हमारा बुलिश ही है. ट्रेंड इज स्टिल बुलिश. सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है यहाँ पे बेसिकली. इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस रेंज. Where is that? Yeah, so this is the range which I'm expecting to carry on tomorrow. So expectation ये है हमारे that it might get pulled down to somewhere around 25,070, 25,270. Or I will of course I will be bullish if it crosses 25,500 now. So 530 के ऊपर अगर ये 25,500 के ऊपर अगर हमको डिसेसिव बुलिश कैंडल मिलती है तो ही मैं बुलिश एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पे. Which can go as high as 25,646. From here to here it's a no trade zone for me. Its market is very volatile. जैसे मैं सुबह डिस्कस किया था, आई थिंक आज एक्सपायरी भी है, आई थिंक बिटकॉइन भी काफ़ी बड़ा था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग वॉलेटाइल मार्केट गैप ओपन करके ट्रेडर्स को ट्रैप किया, उसके बाद फिर डीप डाउन किया. सो सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो एज वेल. आई थिंक market can open little bit of gap up around 25,450 or 480, and from there I'm expecting again to go back to 25,270. So that is the expectation. So plan ये है कि let me walk you through the position पहले. So what is the position which we entered? So ये हमारी position थी, and you can already see that I'm already in 1,286 profit. और ये ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिकली पंच इन हो गया था यहाँ पे, और जो मार्जिन यहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट इज़ 2.65 lakhs. तो ये मार्जिन जनरली अराउंड 1 लाख के अराउंड रहती है. ये एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए रख रहा है ताकि मैंने यहाँ पे एडिशनल सीई सेल किया है. हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यू कैन सी ओवर हियर दैट प्रीमियम इज़ डिकेइंग वेरी फास्ट. even for the 10th July, even though it's very far away. So if you see that it is half the premium and this also almost half.
सो कल अगर थोड़ा सा गैप डाउन होता है या फिर फर्दर प्रीमियम डीके होता है, so I might shift this position, okay, this 25,900 if we go over here, okay, so 25,900 position over here, I will shift this position further down to 25,850 or something, okay, or 800, because if you see, if market goes down, okay, in worst case scenario I'll be making the profit of 1,335 over here, okay. So as we can see that I have already made that profit, okay, in today's market, something around 1,200. If we go here, 1,286. So there is nothing much left for me to go for the DK over here, okay. So tomorrow if market gaps down, I will book my profit in C and shift it further down to 25,800, okay. अगर gap up open होता है तो, और फिर भी अगर मैं 1,300 1,400 के पे मेरा प्रॉफिट रहेगा, then I will book that profit, okay. Now प्लान ऐसा रहने वाला है, ओके, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया गाइस, ओके, अगर 25,270 के पास आता है, ओके, इवन स्पाइक भी आता है यहाँ पे, so this is very strong support, so I will be expecting a pullback from over here to the upward of 25,400 or 500. तो ये वाला पुल बैक मैं छोड़ूंगा नहीं एक्चुअल में, आई विल नॉट लीव दिस पुल बैक, ओके. सो व्हाट आई विल डू दैट आई विल punch in another trigger order, conditional order in sensible, that if market comes around 25,270 or 300, in that case I will also punch in CE order, sorry, PE order, okay. जब मार्केट रिसर्च करेंगे तो PE का प्रीमियम डीके होंगे, which will again add couple of thousand rupees in my portfolio, okay. So that's the plan, guys. The reason I'm having this bull condor over here, okay, it's a modified bull condor, not exactly that, because we are having this US trade deal ongoing, okay. So and the final decision will come around 9th of July. सो 9th ऑफ जुलाई के अराउंड हमारा फाइनल डिसीजन आने वाला है यूएस के साथ ट्रेड डील के साथ. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट एकदम से बुलिश भी नहीं रहेगा और एकदम से बेरिश भी नहीं रहेगा. इट विल मोस्टली प्ले अराउंड बिटवीन दिस रेंज, ओके, 25,550 टू 25,270, ओके, टिल 9th ऑफ जुलाई, ओके. दैट्स माई थिंग. एंड लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 9 जुलाई के पहले ही अगर कुछ खबर आती है अराउंड 8th ऑफ जुलाई, and if it's a good news which in favor of India, okay, so market will lead a little reason to again go back to its high, okay, 25,700 or 750. So that's why as safety of margin I'm using this trading strategy, okay guys. Depending upon different scenario and weeks, I think we need to set up a strategy, because I'm not sitting completely in front of a screen on from between 10 to 5, okay, because I'm having my office as well. So I'm if you see that I'm selling the farther call option over here, because हमको टेंशन नहीं चाहिए, okay. We should be having sufficient safety of margin, okay, because mainly we are trying to get 4 to 5% a month or 4 to 5% a week, okay, whichever is better based on the scenario, to compensate for our portfolio fluctuation, okay. So that's the main strategy. That's why you can see the probability of profit is at 93%. मतलब वर्स्ट केस में भी आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 1,300 रुपये, ऑलमोस्ट 0.5% में लेके जाऊँगा वर्स्ट केस में, अगर यहाँ पे मार्केट काफ़ी नीचे गिरता है तो, ओके. और ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग सम एडजस्टमेंट, सो आई विल ट्राई टू इंक्रीज दैट टू 2.5 to 4% ऑफ माई यूज कैपिटल, okay. So that's the main strategy over here, okay. All right, so going back to chart over here, once again I will reiterate, अगर 270 पास आता है हमने P ऑर्डर ऐड करना है यहाँ पे, और we will wait for the pull back, okay. Okay, now coming back to my swing trading position, I think I'm holding some of the C position, sell position for this level, okay. I will hold it till 4,200 over here, and the moment it will reach around this zone, okay. So if let me draw this one. ये जोन में अगर जब एंटर करेंगे, ओके, सो समवेयर अराउंड 4,200 आई विल स्टार्ट बाइंग. So the way I do the swing trading, let's say I need to invest, let's say 50,000. So first lot I will invest in like over here 4,200, let's say 25,000, and further it goes down to 4,160.
the second 25,000, and I will hold it till 4,350 over here. So that will be my swing trading position. I think 3-4% हमको profit मिल जाएगा इसमें within span of a month or a couple of weeks. So I think people who want to do the swing trading, they can also utilize this strategy. Okay, so let's quickly check with the existing gift nifty हमारा I think 68 points अब बता रहा है. Okay, if I go to commodities, okay, what is Brent crude oil negative है, which is good for us. Gold भी negative है, that is also good for us. Okay, so I think this figure can change overnight, so let's see how thing goes. We can verify that in our pre-market checklist video tomorrow early morning. Okay, so guys, if you are liking this content, please consider liking and subscribing my channel. So I think you had a good night today, and see you tomorrow in the morning. Okay, thank you guys very much. See you tomorrow morning. Bye bye.